like a Hellcat. So, hello guys, we are here and today we are starting the first chapter of Bio, class 9th ncert, as you can see. So, the name of the first chapter of Bio is the fundamental unit of life. Let's start from reading the first para of the chapter. So, here it's given that while examining a thin slice of cork, Robert took. So the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. So it is basically a story of discovery of cell by the scientist Robert Hooke. So it's the story that how Robert Hooke discovered that cell. So first of all, what a cell looked like or how he reacted when he first saw it and when he first saw it. So Robert Hooke saw a cork, a microscopic cork with his own made primitive microscope, and he resembled the structure of honeycombs consisting of many little compartments in that cork. Then it was the year 1665 when Robert made his chance observation through self-designed microscope, as I told you. And Robert Hooke called these boxes cell. So what does a cell literally means? So cell in Latin भाषा में सेल को क्या कहते हैं? A little room or compartment. So it was very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the first time that someone has observed that living things appear to consist of separate units. So this word cell is used from 1665 till this date in biology. So what is cell? And living organism? There are plants, animals. What are living organism made of? So let us understand the concept of our fundamental unit of life by an activity. Here one activity is given, activity 5.1, that let us take small piece of onion bulb. We will take an onion and then peel off the onion skin and then put it on a glass slide containing water. So this will prevent the peel from getting folded or getting dry. तो what do we do with this peel? अब इस peel यानी छिलके के साथ करना क्या है? So now peel perfectly flat on the slide. Then a thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel. यानी जो ग्लास स्लाइड से हमें उसे वॉच ग्लास में उसे ट्रांसफ़र कर देना है पील को. देन आप एक पेंट ब्रश से कर सकते हैं. नाउ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन इस पीस पर हमें रखना है और एक कवर स्लिप लगा देनी है. एयर बबल्स नहीं होने चाहिए. जब हम कवर स्लिप लगाएं तब ये हमें नोट करना है. एंड नाउ you have to watch that peel with the help of a microscope. You will find that we are able to see some structures over there. So these structures are cells actually. And next, so we can also observe the cells over other substances.
So what are these structure? These structure look similar to each other mainly. चाहे onion bulb हमारा बड़ा हो या छोटा हो, but these structures look similar. कभी कभी इनमें चेंजेस आ सकते हैं. मान लो कोई ऑनियन हमने किसी और प्लेस से परचेज किया और कोई ऑनियन हमने किसी और प्लेस से लिया है, तो उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ सकता है. अदरवाइज दे आर जनरली सेम. सो वन मोर थ्योरी इज गिवन दैट first discovered by Robert Hooke. Cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. But he discovered cell at Cork, and that Cork cells were dead cells. So first living cells. Who discovered first living cell? So it was Van Leeuwenhoek in 1674 who improved microscope and discovered living cell in pond water for the first time. Then Robert Brown discovered nucleus of the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm. Then, after Van Leeuwenhoek, many scientists came. Robert Brown in 1831, Purkinje in 1839, who discovered other parts of cell. Then, the cell theory that all plants and animals are composed of cells are basic unit of life, which is presented by two biologists, Skeleton and Swan, in 1838 and 1839. Then the cell theory was further explained with Virchow, 1855. Means the cell theory was developed gradually by other scientists who came in different time period, and they discovered, or you can say they further explained the theory of cell. And then last, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना 1940 में, तब हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स स्ट्रक्चर्स को कम्प्लीटली स्टडी कर पाए, जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे. It means that magnifying lenses, invention of magnifying lenses led to the discovering of microscopic world like amoeba, paramecium, bacteria. These are the organisms who have only single cell. Or on the other hand, plants, animals, human beings, they are the organisms who have many cells. So the organisms which have single cell is known as unicellular organism, and the organism which has multi cells, they are known as multicellular organisms. Now, there are some questions for you कि आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ पढ़ी, इतनी सारी आपने थ्योरीज पढ़ी सेल डिस्कवरी की. सो नाउ यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस सिर्फ अपने कॉमन सेंस से, बिकॉज अभी तक हमने सेल के बारे में नहीं पढ़ा. बट इसलिए हमें सिर्फ जो हमने एक्टिविटीज से सीखा है उसके आंसर्स देने हैं. देन हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं. तो शेप्स बहुत वेरियस सेल्स की शेप्स अलग अलग होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर. जैसे हमने ऑनियन पील की बात की, तो उनके स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर सेम होते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. बट जो ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्स होती हैं उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है. लाइक यू कैन सी, फर्स्ट is smooth muscle cell, then blood cell, nerve cell, ovum, bone cell, sperm, fat cell. These are the different types of cell which have different shapes and size. और इनमें से अगर हम बात करें, सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर बुक, तो इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे हमारा लॉन्गेस्ट सेल जो होता है इन सब सेल्स में से, वो होता है हमारा नर्व सेल. Next, because it have to transmit electrical signals to our brains, to our body. So ये बहुत longest cell होता है हमारी body का. सबसे longest cell is nerve cell. Okay. Next, हम अभी shape and size के बारे में पढ़ रहे हैं. Shape and size related to specific functions. Like nerve cell है, वो इतना long क्यों होता है? Because here it has to transmit body signals. Then blood cells small होते हैं. Then fat cell is also large in shape. So each living cell has the
capacity to perform certain basic function that are the characteristic of all living forms. So अब हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, खाने का हो गया, पीने का हो गया, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे फंक्शंस हम परफॉर्म कर पा रहे हैं. सो हमारा कैसे परफॉर्म कर पा रहा है? क्योंकि हमारा ईच सेल इज परफॉर्मिंग इट्स बेसिक फंक्शन. जैसे हम एक लिविंग यूनिट है, वैसे ही सेल भी लिविंग यूनिट है, इसलिए वो भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक ईटिंग, मेकिंग एनर्जी एंड डिवीजन ऑफ सेल. सो वो भी हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे. नेक्स्ट आ जाता है, हमने डिस्कस कर लिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो हमें ये पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत टाइप्स के सेल्स होते हैं. इसका मतलब ये नहीं, मल्टी सेलुलर क्यों होते हैं? ह्यूमन बीइंग में इतने सारे सेल्स क्यों होते हैं? व्हाई नॉट अ सिंगल सेल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? बिकॉज इसका मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं. जैसे अब हम एल्गे, पेरमोशियम की बात करें तो ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि इन्हें ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं ईटिंग फूड और प्रिपेयरिंग एनर्जी, पर ह्यूमन बीइंग्स को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. नेक्स्ट, each such cell has got certain specific components within the cell organelles. मतलब हर सेल में अपनी ऑर्गन्स होती है. जैसे ह्यूमन बींग्स के पास अपनी ऑर्गन्स है, वैसे सेल की भी अपनी ही ऑर्गन्स होती हैं. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे हमारी ऑर्गन्स हैं, हमारे हैंड्स एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन हमारे जो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. वैसे ही जो हमारे सेल्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स होती है, सेल्स की ऑर्गन्स होती है, वो भी स्पेसिफिक अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. जैसे कोई न्यू मटेरियल बनाते हैं सेल में, कोई सेल को क्लियर करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं सेल से, और सो ऑन. अ सेल लीव करता है, परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स. मतलब सेल जो है वो लिव, जिंदा है, तो वो बस इस फंक्शंस की वजह से ही. एंड no matter what their function is or what organism they are found in, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस ऑर्गेनिज्म में है, वो ह्यूमन बीइंग में है या फिर दे आर फाउंड इन अदर एनिमल्स, बट जो उनके फंक्शन है, एक सेल का, नर्व सेल का जो फंक्शन है, वो अपना वही फंक्शन परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट, दे आर ब्लू बॉक्स क्वेश्चन. हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? सो इसमें आप सबकी थ्योरी डाल सकते हैं, फ्रॉम रॉबर्ट हुक टू द टू साइंटिस्ट टू बायोलॉजिस्ट स्केलेटन एंड स्क्वान. आई थिंक दे वर लास्ट. एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, वाई सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सो बिकॉज दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. अगर हमारी बॉडी को कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो सबसे पहले सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी बेसिकली, अगर हम बॉडी का बेसिक देखें कि हमारी बॉडी बनी किससे है, तो दे आर सेल. फंक्शन देखें, फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, तो दे आर सेल. नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ? सो दिस इज अ लास्ट टॉपिक है जो हम करने वाले हैं. एंड फ्रॉम टुमारो, मतलब कल, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. सो द 5.2.1 टॉपिक वी विल डू नेक्स्ट. अभी बस हम ये व्हाट इज सेल मेड ऑफ और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसकी वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. देन इसके बारे में हम जो डिफरेंट पार्ट्स है वो कल हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज, वी सो अबाउट सेल्स हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. हमने अभी देखा कि अभी सेल्स की जब डिस्कवरी हुई तब बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मिले सेल में, लाइक वी हैव सीन. सो इसका मतलब सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स. तो सेल ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है, मतलब सेल में एक्चुअली होता कैसे है, सब कुछ फिक्स कैसे किया गया है, कौन कौन सी ऑर्गन्स होती है, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. दैट्स, अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करें
तो हमें 3 फीचर्स दिखते हैं ज़्यादातर। तो वो 3 मेनली होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। All these activities inside the cell and interactions within zinc are possible due to these feature. ये सिर्फ हमें बोल्ड जो हम देखें कि मेन क्या है वो हमें ये 3 है दिखते हैं, बट इफ़ वी स्टडी इट केयरफुली तो हम देखें साइटोप्लाज्म में हमारे ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं हमारी। एंड न्यूक्लियस इज लाइक जस्ट लाइक अ ब्रेन, हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन है वैसे ही सेल में न्यूक्लियस है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शंस ऑफ सेल with this environment are possible only due to these features. So let us see how. तो ये हम कल टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो एक बार हम लेट गिव अ साइड देख लेते हैं हम कल कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल डिस्कस द डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, देन वी विल डिस्कस सेल वॉल, देन न्यूक्लियस विच आई सेड ब्रेन ऑफ द सेल नॉन एज, देन साइटोप्लाज्म, एंड देन हम साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ेंगी सेल ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, मिट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब। सो वी हैव कंप्लीटेड आर टुडेज टॉपिक, मतलब हमारा जितने आज हमें पढ़ना था। सो दिस इज वाज द पार्ट 1. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ऑल्सो सी द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर. This is all from the ncert work of bio. Now let's फटाफट से एक बार हमने जितना डिस्कस किया है उसके मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। सो एक बार फटाफट से इन नोट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। These are some questions. सो यहाँ से अगर हम डिस्कस करना चाहें शुरू करें, सो वी विल रीड ओनली दिस. सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल, उसके लिए मैंने सारे पॉइंट्स बना के रखे हैं जैसे रॉबर्ट हुक ने. सो द सेल बाय यूजिंग सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन 1665. फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटोइन मेहक. J.E. Purkinje used term protoplasm. Robert Brown discovered nucleus. So सबसे पहले हमने ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ सेल जब कंबाइन होता है तो टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू कंबाइन होता है ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन कंबाइन होता है ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, और जब ऑर्गन सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, ये सब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. बेसिस ऑफ सेल साइज पे हमने डिवाइड किया हुआ है यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. Like organism made up of single cell, unicellular like amoeba, all activities performed by single cell, and multicellular made up of many cells like animals, fungi. Every cell is specified to perform a specific function. Next, basis of shape पे अगर हम देखें, the shape and size of cells different due to location and function in the tissue. जैसे मैंने बताया फंक्शन होता है नर्व सेल का, वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स, दैट्स वाई उसका फंक्शन अलग है, इसलिए इसकी शेप भी अलग हुई. स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ होता है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है. जितने भी एग्स होते हैं जितने भी एनिमल्स के वो सिर्फ एक सिंगल सेल होते हैं. एंड वन मोर थिंग अबाउट यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज कैरिड बाय वन सिंगल सेल, एंड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सम सेल्स कॉल्ड germ cells टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट tomorrow we will discuss different organelles of हमारा सेल. सो तब तक के लिए हाँ आप ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, प्लस इस चैप्टर को रीड करें, इसकी थ्योरेटिकल चैप्टर को रीड करेंगे. सो बाय. एंड if this video was helpful to you, then please like this video, and for our next video please subscribe our channel. Thank you.